Good morning, students. This is the fifth video of Chapter 1, Reproduction in Organisms. In the previous video, we were discussing about different phases such as juvenile phase, reproductive phase, and old phase in organisms. In this video, we will talk about events in sexual reproduction. But let's first talk about sexual reproduction. So, sexual reproduction in organisms is a process in which gamete formation takes place. Gamete are the sperm and the ovum. Sperm is the male gamete and ovum is the female gamete. Sperm arise from male reproductive organ and ovum or the egg arise from female reproductive organ. Both these gametes fuse and fertilization takes place. After the fertilization process, zygote forms. Zygote is a 2N, that is the diploid. Both the gametes, that is the sperm and the ovum, were haploid, means they have single number of chromosome, N number of chromosome. After the formation of zygote, embryo develops. After the development of embryo, fetus develops and then it changes or transforms into new individual altogether. Formation of gamete is known as gametogenesis. Gametogenesis is of two types. One, male gamete formation, that is the spermatogenesis, and female gametogenesis, that is the female gamete formation known as oogenesis. After the formation of zygote, mitotic division takes place and mass of cell is formed. After the formation of the mass of cell, embryo formation takes place. Then certain organs develop and then organism finally develops into a new individual altogether. So, whatever changes happens before zygote formation are known as pre-fertilization changes, and whatever changes happens after zygote formation, that are post-fertilization changes. Post-fertilization changes is the formation of zygote, then the zygote divides and morula develops. Morula changes or transforms into blastula. Blastula transforms into gastrula, that is the formation of three germ layers known as germ layers, that is the ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, this was just the summary. Let's now start with event in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities. Even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different, the events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स हैं, वेदर इट बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सारे इवेंट्स में एक कॉमन सीक्वेंस होती है और ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट डिवाइड होता है और मॉर्यूला में ट्रांसफॉर्म होता है. Then morula changes into blastula followed by gastrula formation. Okay, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहती है, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती. ब्लास्टुला से पहले गैस्ट्यूला डेवलप नहीं हो सकता और गैस्ट्यूला से पहले मॉर्यूला डेवलप नहीं हो सकता. So, sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of the male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into three different stages, namely pre-fertilization changes and post-fertilization changes. इस सीक्वेंस को अच्छे से समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इसको ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन से होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, और
फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जितने भी स्टेप्स आते हैं उन सब को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. Pre-fertilization events. These include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. Pre-fertilization event में gamete के fusion से पहले दो events होते हैं. That is gametogenesis means formation of gamete, both male and female gamete separately. Male gamete का formation spermatogenesis and female gamete का formation is oogenesis. So gametogenesis and then gamete transfer. Gamete का fusion होने के बाद उनको female body में transfer भी तो होना है. Male gamete is transferred to the female body. That process is due to copulation. Let's take both these processes in detail. First is gametogenesis. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes, male and female. Gametes are haploid cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. जैसे कि हमें पता है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में दो गैमेट के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, मेल गैमेट के फॉर्मेशन की एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की. गैमेट्स पहले हेप्लॉइड होते हैं और फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन अभी प्री फर्टिलाइजेशन है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले के स्टेप्स की बात कर रहे हैं हम. सो अभी कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए अभी गैमेट्स हेप्लॉइड हैं. कुछ एल्गी में गैमेट्स इतने सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में कि उनको नेकेड आई से देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल. See in figure 1.5 there are three types of gametes. First two are gametes of algae. First is the isogamete of Cladophora, that is an alga, and second is heterogametes, that is fucus. This is also an algae. Third one is the gametes of human beings. First figure, that is a round figure, it is the egg or the ovum, and the second or the last figure is the sperm. क्योंकि एल्गी के गैमेट्स इतने सिमिलर है कि उनमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि विच वन इज द मेल गैमेट एंड विच वन इज द फीमेल गैमेट, दे आर कॉल्ड होमो गैमेट्स. होमो मीन्स सिमिलर and gamete means the gametes. They are hence called homogametes. Isogametes, however, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct type, that is heterogametes. Heterogametes humans के केस में है. दोनों का स्ट्रक्चर आप देख चुके हो. Egg and the ovum both are different in structure, both morphologically and physiologically. So these are heterogametes, and first figure, that is the alga, it is the similar type of gametes. So it is homogamete, also known as isogamete. In such organisms, the male gamete is called anthrozoid or sperm, and the female gamete is called the egg or the ovum. See, as you can see in the third figure, both the gametes are of different shape, both physiologically and anatomically. So these are called heterogametes, and the male gamete is known as sperm, that is the last figure, and the female gamete is the egg or the ovum, the round one. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. For your recollection of examples studied in class 11th, can you identify cases where self-fertilization is observed? Of course, citing such examples in plants is easy. Now,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमें पता है कि सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए 2 इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रॉबेबली 1 मेल एंड 1 फीमेल। ओके, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 2 अलग इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक ही इंडिविजुअल सफिशिएंट होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। अगर आप प्रीवियस क्लास की मेमोरीज रिकलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप प्लांट्स के ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल प्लांट स्पीशी या सिंगल प्लांट इंडिविजुअल केपेबल था रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के। बट एनिमल के केस में ये प्रोसेस या ये एग्जाम्पल्स रिकलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां पर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही करता है। Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant. Those plants are known as bisexual. Or on different plants, those are known as unisexual. जिन प्लांट्स में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। उसमें मेल प्रेजेंट हो सकता है या फिर फीमेल प्रेजेंट हो सकता है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। जिन प्लांट्स में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाय मीन्स टू एंड सेक्सुअल मीन्स टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। In several fungi and plants, terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. अगर हमें प्लांट्स की बाइसेक्सुअल कंडीशन डिस्क्राइब करनी है, मतलब जिसमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल, तो हम उसको होमोथेलिक या मोनोइशियस बोलते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो उसके लिए हम हीट्रोथेलिक या डायोइशियस टर्म्स का यूज करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, दैट इज बेयरिंग स्टेमन्स, while the female is pistillate or bearing pistils. जिन प्लांट्स में सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्टेमिनेट बोलते हैं, बिकॉज उनमें सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है। जिसमें पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, उनको पिस्टिलेट बोलते हैं, बिकॉज उनमें फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स may be present on the same individual, that is known as monoecious, or on separate individuals, that is known as dioecious. Some examples of monoecious plants are cucurbits or coconuts, and of dioecious plants are papaya and date plant. But what about animals? Are individuals of all species, either male or female, unisexual? Or are there species which possess both reproductive organs, that is, bisexual? You probably can make a list of several unisexual animal species. Earthworms, sponge, tapeworm, leech are typical examples of bisexual organism. जब हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मतलब जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ईदर मेल और फीमेल, वी कैन मेक अ लिस्ट इजीली। बट अगर हम बाइसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें तो उसके लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज वो रेयर केसेस होते हैं। लेकिन अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बाइसेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। They possess both male and female reproductive organ and are hermaphrodites. Cockroach is an example of unisexual species. कॉकरोच में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है एक टाइम पर, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है। बट अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बिकॉज उनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर present. Okay, understood. Now in the next video, we will talk about cell division during gamete formation.